हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं 10 मिनट बिगनर योगा सीक्वेंस। आई होप यू विल एंजॉय दिस। फर्स्ट थिंग इज़ टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द मैट, देन वेरी जेंटली arch your back, taking your pelvis forward and then go all the way forward in a forward fold. If you want, you can also bend your knees here. Make sure you're touching your stomach and your thighs together. Then take your right leg back and just stay there in a deep lunge. Make sure you're breathing out and arch your back. Look up and hold that. Very gently, we take the left leg back, coming in high plank, knees and chest to the ground, and coming into the cobra position, staying there for a few seconds, going into downward dog. Now make sure your chest is coming closer to your thighs, making your spine straight. Hold that for a few seconds. Now coming back to the base position, right leg forward, left leg forward, roll up, arch back, and placing the palms close to the heart. We're going to repeat this sequence on the other side now. Keep breathing in and breathing out, and connect your breathing to the movement. Hold every stretch for at least 10 seconds. You can do Surya Namaskar every day for how many rounds that you want. नेक्स्ट आसन में आप अपने एक पैर को आगे लेके जाइए और एक पैर को पीछे। जो लेग आगे है उसको बेंड कर लीजिए और अपने आर्म्स को ऊपर ले जाके जॉइन कर लीजिए। अब धीरे धीरे आर्च करिए और इस पोजीशन को 10 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखिए। Now we will be repeating this stretch on the other side. From there we come in a forward fold, extending those knees and going back into downward dog. इसके बाद हम करेंगे कैट काउ स्ट्रेच, जो आपकी लोअर बैक और स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा है। ब्रीद इन करके अपनी लोअर बैक को आर्च करिए और ज़मीन को अपने पाम से पुश करिए। कॉन्ट्रैक्ट करिए वहाँ पे अपनी बैक को और इस प्रोसेस को एटलीस्ट 10 टाइम्स रिपीट करिए। ब्रीद इन व्हेन यू आर्च योर लोअर बैक एंड ब्रीद आउट व्हेन यू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आसन और द नेक्स्ट स्ट्रेच इज़ कॉल्ड एज पिजन स्ट्रेच। ये आपकी पेल्विस और टाइट हिप्स को ओपन करने में बहुत हेल्प करेगा। आप अपनी एक लेग को आगे फोल्ड करके अपनी बैक लेग को स्ट्रेट कर लीजिए और इस पोजीशन में कुछ सेकेंड्स होल्ड करके रखिए। आप चाहें तो अपनी बैक लेग को भी बेंड कर सकते हैं, बट मेक श्योर करिए कि आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं थ्रू आउट द स्ट्रेच।
इसके बाद हम डाउनवर्ड डॉग की पोजीशन में आ जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी नीज़ को बेंड कर सकते हैं और हम अब वॉक करना स्टार्ट करेंगे। सो आप अपने टोज़ को और हील्स को ऐसे मूव कर सकते हैं। मेक श्योर करिए कि आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट है। नेक्स्ट आसन का नाम है कैमल पोज। इसके लिए आपको अपनी नीज़ पे आना है और धीरे धीरे अपने आप को पीछे पुश करना है। अपनी लोअर बैक को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं और अगर आपकी बॉडी अलाउ करे तो आप अपने हील्स को पकड़ के अपनी चेस्ट और अपनी स्टमक को आगे पुश करते रहिए और अपने हेड को पीछे की तरफ इजीली हैंग होने दीजिए। के बाद हम करेंगे चाइल्ड्स पोज। तो अपने हिप्स को अपने हील्स पे रख दीजिए और बस यहाँ रिलैक्स करिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। होल्ड दिस पोजीशन फॉर फ्यू सेकेंड्स। From there we go into the cobra stretch. Push the ground away with your palms. And just look up and breathe. Now we repeat this sequence. अपनी pelvis को ग्राउंड की तरफ पुश करते हुए कोबरा स्ट्रेच में आइए, होल्ड करिए and breathe out. Very gently sit back in child's pose. Now we're gonna come into the butterfly stretch. अपने soles को join करके रख लीजिए and just keep flapping those knees. Relax your shoulders, relax that body, keep your spine straight and breathe out. Now with both the hands, push your knees, open it up. Bring it close to the ground. This is going to open your tight hips. So अगर आप दिन में 8 से 9 घंटा एक जगह पे बैठते हैं, ये स्ट्रेच आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। From there, take one hand, place it on the ground and stretch the other hand, stretching your sides and breathe out. Do it on the other side. Don't forget to breathe out as you stretch. Now we're going to go into a spinal twist. Place your palm on the opposite knee. Twist back and stay there. Feel the stretch in the spine. And breathe out. Now we're going to breathe there for a couple of times. If there's anything that's bothering you, know that at the end, everything is going to be okay. It's all temporary. Stay in that present moment and just keep breathing out gently. Try to focus on the breath. Breathe in through the nose and exhale out through the mouth. Gently rubbing the palms together, producing warmth. Place it on your face, feeling the warmth.
and open your eyes gently. If this stretch made you feel good, please do subscribe to my channel. Bye.